Namaskar. Good evening, viewers. You're watching House Highlights on Sansad Tv, and I'm Rajiv Kumar Singh. We get you today's updates from both houses of the Parliament. Let us begin with the headlines. Every issue can be raised on the floor of the House under the relevant rules, assures Chairman Dhankar, reminds members that House of Elders must try to douse the fire and not ignite it. Private Members' Bill on Uniform Civil Code introduced in Rajya Sabha. 4 bills to amend the list of scheduled tribes in 4 states introduced in Lok Sabha. Bills relate to Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Karnataka and Chhattisgarh. Starting with the proceedings in the upper house. Chairman Jagdeep Dhankar clarified on Friday that every issue can be raised on the floor of the House under relevant rules. He asserted that all the suggestions of the members are welcome and assured accommodation. Chairman also said that he was ready to run the House until midnight for articulating the will of the people. There is no issue which can't be raised according to rules. We must exemplify our conduct that can be emulated. I am here to assure you that expression of any nature will find vent. It cannot be in the ad hoc fashion. If an honorable member was to rise here suddenly, raise an issue, reach a conclusion that a view has been taken, that will not be very fair to the office I hold. I am available to the members every day from 10 a.m. and thereafter during the House and up to late evening hours. I would always welcome any input from the honorable members, accommodate them. If in the ballot a matter of urgency has been left out for one reason or the other. Chairman Jagdeep Dhankar said that as House of Elders members must try and douse fire and not ignite it. He assured members that Leader of the House, Leader of Opposition and former Prime Ministers Dr. Manmohan Singh and H.D. Deve Gowda would be given the floor irrespective of the rules. Can you imagine my pain? I am getting input from everyone all over the country. What happens here? You will get from select category, I will get from everyone. As an exceptional situation, I gave the honorable member 30 seconds. I hope he would make his input. We are not to ignite things. We have to douse fire everywhere. If we become the epicenter of it, where it will lead us? Leader of the House, Leader of the Opposition. We have the former Prime Minister. I have declared on the floor of this House that these 3 honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh, if they rise, I will not look at the rule book. I said so in your presence. And all of you have access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. But if you start making it the way you are doing it, you are entitled. Do it in my chamber. Do I take it now that we will exemplify our conduct to a level that everyone will say, yes, upper house is a role model of decorum, discipline. It is a theater for dialogue, debate, deliberation and discussion. Amid protests from opposition parties, Private Members' Bill that seeks to provide for a panel to prepare a Uniform Civil Code was introduced in the Rajya Sabha today. The Uniform Civil Code in India bill
2020 was moved by BJP MP Dr. Kirori Lal Meena. I move for leave to introduce a bill to provide for the constitution of the National Inspection and Investigation Committee for preparation of Union Civil Code and its implementation throughout the territory of India and for matter connected therewith or incidental hereto. Opposition members from the Congress CPI, CPIM, TMC protested against the introduction of the bill, saying that this will create difference in society. Union Minister Piyush Goyal urged the members to let the bill be introduced as it is the right of the member. With the opposition members seeking withdrawal of the bill, Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar called for division, and the motion for introduction of the bill was passed with 63 votes in favor and 23 against it. संविधान के आपने शुरू में सर कहा था कि अगर संविधान के अनुकूल कोई बात है तो उसको रखने से, इंट्रोड्यूस करने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन संविधान के अगर प्रतिकूल है तब तो उसे रोका ही जा सकता। आपको इसे अलाउ भी नहीं करना चाहिए थे और इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। This kind of extremities should come and spoil the democratic fabric of this country. I sincerely request honorable member to please withdraw and keep way for all the healthy minds to go on like this. At this stage, to cast aspersions on the government. Please be brief. To cast aspersions on the government, to use the names of the very members of the Constituent Assembly to try and criticize this bill at the introduction stage is uncalled for. Let's take a look at some of the important issues raised in the upper house during zero hour. मान्यवर शॉर्ट सर्किट एक ऐसी समस्या बन गई है कि आज कोई भी बिल्डिंग उसमें सुरक्षित नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी गोदामों में, कारखानों में आए दिन आग की घटनाएं सुनने को मिलती हैं और उसमें अरबों रुपए की हमारी संपत्ति की क्षति होती है और बहुत बहुमूल्य जाने जा रही हैं। तो मान्यवर मैं चाहूंगा इस विषय पर सरकार चिंता करे कि कैसे आज ये बढ़ती हुई जो आगजनी की घटनाएं हैं इन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है और इसके लिए सरकार संज्ञान लेने का काम करे। Some of the policies of the government, sir, with one-size-fits-all approach, example applying TOD, the transit-oriented development, which has come in recently, an increase in FSI 4 times just to make a metro financially feasible with absolutely no regard as to the carrying capacity of that particular city. And what is the kind of water and infrastructure which goes along with it, which is required. This will make our cities grossly unhealthy and non-livable. So we have to stop this as of now, and the time is now, sir. Questions related to India-China trade relationship and boosting textile sector in Darjeeling and Kalimpong, among others, were taken up during question hour in Rajya Sabha. What are the steps that the government is taking to reduce the trade deficit between India and China, and how the PLI measures and the schemes would really help in terms of reducing this trade deficit, and what is the expected forecasted trade deficit in the next few years? How this government has, through a number of initiatives today, focused its attention on promoting Make in India. Sir, we have introduced production-linked incentive schemes where between semiconductors, where we are giving 76,000 crores, and 24 other sectors where we will be giving as Government of India 1.97 lakh crores as support to Indian industry. For the first time, such large measure of support at the central government level to promote domestic manufacturing, make our manufacturing competitive, and start reducing imports from China. भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है, पर मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भारत में प्रतिदिन कितना दूध उत्पन्न होता है और कितना दूध बिकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट उसमें होती है और किसानों को इसी से नुकसान है। मिलावट कोई जानबूझ के नहीं करता है। मिलावट के बारे में जानकारी जैसे ही कंज्यूमर अफेयर्स में या कोई
डिपार्टमेंट में आती है तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका कार्रवाई करता होगा। अवश्य उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी से हमारी व्यवस्थाएं काम करती होंगी, लेकिन अगर माननीय सांसद महोदय को कोई विशेष जानकारी है कि कहाँ मिलावट हो रही है, कौन कर रहा है, तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। Other than the legislative business, the House also had its lighter moments. Here is a look at one such moment. Dr. V. Sidasivam. Shivdasan. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And I know, I don't believe in Shakespeare who says there is nothing in name. Everything is in name. Shivdasam. Yes. The pronunciation is the matter, sir. Go ahead. He is Dasan of Shiva. Time for a break in the bulletin. On the other side, news from the Lok Sabha. ये नगर उस परंपरा का है जिसने चाय बेचने वाले को देश के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का सपना दिखाया और जज्बा जगाया, जो सिखाता है कि सितारे तो टिमटिमाते हैं, सूरज बनने के लिए खुद को तपाना होगा। लोग हमारी स्पीड भी देख रहे हैं, हमारा स्केल भी देख रहे हैं और हमारी काम करने की स्किल भी देख रही है, और एक दाग नहीं है। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। Welcome back to House Highlights. Let's now take a look at the key takeaways from the lower house on Friday. During question hour in the lower house, BJP MP Ganesh Singh sought reply on seats in medical colleges. Minister of Health and Family Welfare Dr. Mansukh Mandavia said the centre has increased MBBS seats from 14,000 in 2014 to 96,000, while PG seats have been increased to 64,000. प्रधानमंत्री जी ने जो देश के आकांक्षी जिलों की पहचान की थी, उनमें भी 41 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है। ये बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा। इसके साथ ही MBBS की 10,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य जो तय किया गया है, इससे गांव-गांव में अब डॉक्टर पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। क्या सतना मेडिकल कॉलेज की जो अभी निर्धारित सीटें हैं, उन्हें और बढ़ाने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के स्टूडेंट को देश में ही MBBS एजुकेशन लेने का अवसर मिले, उसके लिए 2014 से लगातार प्रयास हो रहा है, ताकि देश के युवा हमारे विद्यार्थियों को विदेश में जाके पढ़ने की नौबत ना आए। और इसलिए भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सीट भी बढ़ाई है, कॉलेज भी बढ़ाई है, और देश में 2014 में हमारे पास जो कॉलेज थी उसमें बढ़ा के आज वो डबल की ओर पहुँच गई है। Senior Congress leader and MP from Anandpur Sahib, Punjab, Manish Tiwari, inquired about the opening of Passport Centre in his constituency district, Shaheed Bhagat Singh Nagar. MOS External Affairs V. Muralidharan said the government is trying to open Passport Seva Kendra in every constituency. लगातार और निरंतर लिख के भेज रहे हैं कि वहां पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है और उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को ऑपरेशनलाइज करना है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को ऑपरेशनलाइज करेगी, और करेगी तो कितनी देर में करेगी, और अगर नहीं करेगी तो उसका क्या कारण है, और कहीं ये तो नहीं
क्योंकि ये एक विपक्ष के सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप काम नहीं करना चाहते। Irrespective of who the parliament member is, whether it is opposition ruled state or whether it is a constituency represented by a member from the opposition, I have personally inaugurated the passport seva kendras in the constituencies of members from the Congress party in Kerala. So we have never made it a criterion for allowing passport seva kendras. During question hour, AITC MP from Serampur, West Bengal, Kalyan Banerjee, requested the Health Ministry to increase the cancer care centres and initial care in the rural primary health care centres. MOS Health and Family Welfare Dr. Bharti Praveen Pawar said the ministry is working on the early diagnosis of cancer. COVID-19 pandemic has disrupted non-COVID healthcare system, leading to concerns about its subsequent impact on non-COVID disease conditions. The diagnosis and management of cancer has also affected. Sir, between March 1 and May 31st, 2020, the number of new patients registered, there is a reduction, 54%. In this backdrop, I put a question that whether the government is having a planning to start cancer detection center and initial care service in the rural primary health centers in the country. आज हमने देखा जाए तो HWC के थ्रू लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर के डिटेक्शन किए हैं, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर एंड 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है। ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा सर PHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सेवाएं हैं। उसके बाद सर टर्शरी केयर के लिए पेशेंट को सुविधा मिले, इसलिए लगातार जैसे पहले जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस, एम्स बढ़ा रहे हैं और उसके अलावा सर हमारे 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स लगभग बढ़े हैं इन 8 सालों में। The government introduced 4 constitution amendment bills in the Lok Sabha. 2 bills are related to modifying the list of scheduled tribes in Tamil Nadu and Karnataka, and the 2 are related to the inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes in Himachal Pradesh and Chhattisgarh. Union Tribal Affairs Minister Arjun Ram Munda introduced the Constitution Scheduled Tribes Order 2nd, 3rd, 4th and 5th Amendment Bills 2022. Post-question hour, matters of urgent public importance were taken up. BSP MP from Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh, Ritesh Pandey raised the issue of data hacking in government organizations. He cited instances of hacking in AIMS, ICMR and National Grid. Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary criticized the government's decision to demonetize high-value currency notes. BJD MP B. Mahtab demanded that the family of patriots status to family of freedom fighters. दिल्ली में एम्स पर हुए साइबर हमला और डेटा सेंधमारी बेहद चिंताजनक है। कई दिनों के बाद भी सर्वरों पर नियंत्रण नहीं पाया गया है और ना ही कायदे से हैकरों की पहचान हो पाई है। एम्स के बाद 30 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि ICMR पर के सर्वर पर एक ही दिन में 6000 बार सेंधमारी की डेटा हैकिंग की कोशिशें हुई, जो कि बेहद चिंताजनक है। जैसे जैसे डिजिटल तकनीकें बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे देश के तमाम सिस्टम डिजिटलाइज हो रहे हैं, ये डेटा सेंधमारी और डेटा हैकिंग बहुत ही चिंताजनक होता चला जा रहा है। इसका परिणाम हमने ये भी देखा था सर कि अभी कुछ दिन पहले नेशनल ग्रिड पर भी जो है सेंधमारी हुई थी, उसको कैप्चर कर लिया गया था, जिससे यूपी में भी हर जगह पे
बिजली की व्यवस्था में कटौतियां आने का काम हुआ था। ये बेहद चिंताजनक है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेकर के एक व्यवस्था देनी चाहिए और सदन में आकर के इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। सर, जिस मकसद को सामने रखकर ये नोटबंदी किया गया था, आज ये साबित हो रहे हैं एक भी मकसद, एक ही उद्देश्य सफल नहीं हुई, सारे नाकाम हो चुके हैं और साथ साथ हिंदुस्तान की आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं। आज हम अमृत काल मना रहे हैं। मेरा निवेदन केंद्र सरकार से है कि ये अमृत काल में जितने स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित है, उनको तो सम्मान करे, पर उसके साथ सारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार को फैमिली ऑफ पैट्रियट्स इस हिसाब से एक आइडेंटिटी भी मिलना चाहिए। मेरा मांग ये है कि जैसे अमेरिका में जो आज से करीब 200 कुछ साल पहले वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, हर एक परिवार को चिन्हित करके उनको फैमिली ऑफ पैट्रियट्स के हिसाब से सनद मिला है। The discussion under Rule 193 on the need to promote sports. MP K. Suresh sought the attention of Sports Minister to increase the popularity of boat races in India. MP Sanjay Seth requested the Sports Minister to open a sports university in Ranchi. Sir, so far the Government of India, Ministry of Sports, are not given any attention of this boat racing competition in Kerala. That's why I would like to invite the attention of Honorable Sports Minister to intervene, to participate or to help this. Sir, the lack of permanent or semi-permanent pavilion for spectators of the snakeboat race is important issue. Even though a small pavilion is erected Punnamada for Nehru Trophy, huge capital expenditures making organizers refrain from construction of pavilion, since snakeboat race is known as cricket in the waters. Debate its popularity, the infrastructure deficiency must be addressed through the central government. ये मांग करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार आश्वासन नहीं दे। अब तो सीधे भारत सरकार इसको देखे। और मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेलने वाले खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार हो, भारत सरकार तैयार करे, उसकी मॉनिटरिंग करे और समय समय पर उनका हौसला अफजाई करे। ठीक है। Minister of Youth and Sports Affairs Anurag Singh Thakur, in his reply, informed the House that the budget allocated to sports has increased considerably in the last 10 years. 2013-14 में जब हम सत्ता में आए, भारत सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अवसर मिला, तब कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का बजट 1219 करोड़ था, जो बढ़कर इस वर्ष 2022-23 में 1219 करोड़ से बढ़कर 3062 करोड़ रुपया हुआ है, जो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। और जो अगर मैं सिर्फ खेल विभाग की बात करूं, तो ये 874 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 2254 करोड़ रुपया हुआ है। इसमें भी भारी सुधार हुआ है। एक विषय बीच में आया कि शायद खर्चा कम हुआ, ऐसा नहीं है। केवल एक वर्ष जब हम कोविड की महामारी देश और दुनिया झेल रहा था, अगर आप देखेंगे 2019-20 में 1945 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन खर्चा जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ वो 2341 करोड़ रुपया हुआ। That's all in the bulletin today. Keep watching Sansad TV for all the parliamentary updates. Have a good night.